me? Oh, no, thank you, please. It's already tasted. And her. Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video of Mary Kinder. My name is Mariam and I'm a stay-at-home mom. अगर आप होम स्कूलिंग पेरेंट्स हैं और थीम बेस्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो और ऐसी आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेशनल कंटेंट. अगर आप थीम बेस्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आज की एक्टिविटीज़ को आप अपनी होम स्कूलिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो एन ओशन थीम करिकुलम कैन बी बोथ exciting and educational for our young learners. So here I am sharing with you a structured approach to create a comprehensive ocean theme homeschooling. आज की वीडियो में मैं आपसे हमारा ocean themed week discuss करूँगी. I'm so excited to kind of go through what we're up to this week and how it is actually going. So we are doing writing practice and reading pretty much 5 days a week. I took some free printables from Pinterest that is a mix of activities and writing practice. So it really keeps kids entertained. आप ऐसी एक्टिविटी बुक्स बच्चों के लिए घर में भी बना सकते हैं. So first of all you have to plan your content and decide what is the theme and outline sections that includes coloring pages, puzzles and drawing prompts. So you can grab these printables on Pinterest and make sure they all are age appropriate. While you make an activity journal, get to include a mix of illustrations, science and facts. It begins with letter K. Yay. Butterfly. Yeah, butterfly. And Bee. Flower begins with letter yes. Ch and her. Begins with letter B. No. It begins with letter her. T. Yeah, it begins with 2, so you have to tick over here on T. Let's find the starfish. Yeah, the half starfish. Heather. The glue. बस सिर्फ 2 एनिमल्स रह गए हैं. ओके, एक हमारे पास whale है and other we have a jellyfish. अगर हम whale के साथ jellyfish लगा दें तो A good idea. It's a good idea? Yes. No, I don't think so. I think so. Whale upset हो गई है. वो कह रही है मुझे मेरा हाफ पार्ट चाहिए. चले हम इसको दे देते हैं. ये जेलीफिश होना नहीं पकड़ी है. Yeah, she looks like an octopus. Okay, you can take some glue. No, thank you, please. It's already tasted. All right. So here is a prep up of our ocean board. We are using blue shades and brown background to mimic the colors of ocean. I'm using some printables with underwater scenes featuring fish, coral reefs, sea turtle and other marine life. मैं सब पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों की होम स्कूलिंग को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. सो यू नो बाय इंकॉर्पोरेटिंग दीज आइडियाज यू कैन क्रिएट an immersive ocean themed environment that stimulates children's imagination. Don't forget to watch our next video. It will be on ocean vocabulary and spy ocean creatures. Till then, bye bye.